Namaste. I am Khyati. And I am Kshiteissh. This video is a part of our series, The Hidden Gems of Hyderabad. Shakespeare said, and I quote, "All the world's a stage, and all men and women are merely players. They have their entrances and exits, and one man in his life plays many parts." We are honored to have with us here today Professor Bhaskar Shewalkar ji, who is one of the most experienced and prominent theatre personalities of Hyderabad. He has donned many hats of an artist as a director, as a performer, as an actor, as an adapter of plays, and has guided many PhD students and has been the subject of the PhD thesis himself. Warmly welcome you, sir. नमस्कार नमस्कार धन्यवाद Tell us about your experience. How did you venture into theatre, and what inspired you? थैंक यू बड़ा अच्छा सवाल है थिएटर में तो फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई एंटर इन द थिएटर बिकॉज आई born in Maharashtrian family and we used to have every year Ganesh Utsav. In the Ganesh Utsav there will be a kind of festival called Mela. In that Mela, the singers will sing their songs. The man who is doing the comedy, he will do the comedy. The man who want to do something there. But the performance will be there, and that kind of encouragement was there previously. And I used to, when I was studying in the school, Vedic Dharma Prakashika High School, मराठी मीडियम, अभी वो हाई स्कूल चालू है मराठी मीडियम में. तो जब मैं स्कूल जाता था, मेरा ख्याल है 3rd स्टैंडर्ड में जब मैं गया तो मेरे को आदत आई वाज हैविंग ए काइंड ऑफ हैबिट और इन माय नेचर इटसेल्फ टू इमिटेट द टीचर्स की इमिटेशन करता था. अच्छा. उनका मजाक उड़ाता था कोई बच्चे नहीं रहे तो. और वो एक दिन 5th में आने के बाद तो कंप्लेंट हमारी चले गई. हमारे जोशी बोल के एक थे, तो उनके पास कंप्लेंट चले गई कि ये आदमी जो बच्चा है तो बहुत नॉटी है और हर वक्त किसी भी टीचर की नकल करता है, किसी भी टीचर को इमिटेट करता है, किसी रास्ते वाले को इमिटेट करता है, जादूगर को इमिटेट करता है, गारुड़ी को इमिटेट करता है. यानी पहले से ही मेरा परफॉर्मेंस की तरफ एक एटीट्यूड था टोटल. उतना मैं बोलूँगा. जब कहा गया तो हमारा स्कूल डे था. स्कूल डे के दिन हमारे वो टीचर ने शशिकांत पाठक बोल के थे. उन्होंने बोले भास्कर इकडे इकडे. मैंने बोला काय सर. तुम नकल अच्छी करते हो. बोला हाँ नकल करता हूँ मैं. तुम मेरी नकल करोगे? बोला बिल्कुल करूँगा सर, क्यों नहीं करूँगा. ओके. करूँगा क्योंकि उनको स्टेज फियर ऐसा था ही नहीं. तो मैंने उनकी नकल की. बोले शाबाश शाबाश, कल ड्रामे में तुम काम करना है. बोला नाटक में काम करना है. अब परेशानी आ गई क्योंकि नकल जो है सो मैं अपने दिल से करता था. नाटक के अंदर डायलॉग्स थे और उसका गावातलं ढ गाढव बोल के नाम प्ले का नाम था मोरूची मावशी परतुनी आली. मोरूची मावशी वापस आ गई. मोरू की मावशी वापस आ गई. उसमें सिर्फ स्टेज के ऊपर जाके मुझे बोलने का था गावातला ढ गाढव. मैं जब स्टेज के ऊपर एंटर हो गया, बहुत से लोग बैठे हुए हैं सामने, बच्चे बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. और जब मैं गया तो 2 लाइन नहीं बोल सका, भाग के आ गया रोते हुए अंदर. आते हमारे जो शशिकांत पाठक साहब थे, उन्होंने एक झापड़ रख दी. बोले चल फिर स्टेज के ऊपर जाके तेरे को बोलना पड़ेगा. बोले तू जब तक नहीं बोलेगा गावातला ढ गाढव आप अंदर नहीं आना. वहां से मेरा थिएटर शुरू हुआ. गावातला ढ गाढव बोलने से शुरू हुआ. और मेरे को रीडिंग की हॉबी बहुत है. मैंने थिएटर बहुत कुछ पढ़ा है. पहले भी नाटक नहीं भी करते तो नाटक की किताबें पढ़ता था. मेरे को डिटेक्टिव बुक्स मैंने नहीं पढ़े हैं कभी, या लिटरेचर का बहुत क्लासिकल लिटरेचर नहीं पढ़ा है. लेकिन नाटक की किताबें किसी भी भाषा में, हिंदी में रहो, अंग्रेजी में रहो या मराठी में रहो, ये 3 ही भाषा में मैं पढ़ता था. और नाटक दिल में बोलता था कि नाटक ये तो अच्छा है, नाटक ये तो अच्छा है, नाटक ये तो अच्छा है. ये ग्रुप मिला
रंगाधारा ग्रुप हमने फॉर्म किया। मैंने, आनंद कुलकर्णी, भास्कर कुलकर्णी और विजय पर्वेकर, 4 फाउंडर मेंबर्स हैं। अब उसमें से 2 रह गए हैं, 2 चले गए हैं। लेकिन उसके पहले हमने और एक बात की थी, हमने रंगाधारा ग्रुप ने, कि ये डिसाइड किया था कि हम टिकट फ्री शो नहीं करेंगे। पहला शो था हमारा एक नारी 4 ब्रह्मचारी। पहला प्ले एक नारी 4 ब्रह्मचारी हमने किया था। वो उसमें प्रफुल्लता नातू बोलती थी, उनकी बेटी ने काम किया था, प्रफुल्लता नातू, और प्रोड्यूसर ऑल इंडिया रेडियो। ओके। लेकिन हमने टिकट रेट रखा था, फुकट किसी को भी नहीं छोड़ने का। आर्टिस्ट को सिर्फ एक पास मिलेगा पहले से ही हमने, और किसी के घर जाके टिकट देना नहीं है, नहीं, क्योंकि घर को जाने का टिकट देने का, अरे मैं नहीं आने वाला था भाई, लाइए आप आए हैं ना, ठीक है टिकट ले लेते हम, और नाटक को नहीं आते हम। नहीं आते। बहुत सी जगह ऐसा होता है, मैं तुमको बता दूं बाद में क्या एग्जाम्पल्स। मैंने रविंद्र भारती में 1000 रुपीज का टिकट 50 रुपीज में खरीदा है। कुछ शोज जो कॉर्पोरेट शोज होते हैं उसको हम वाइट बोलते हैं, क्योंकि हम घर जाके जबरदस्ती बेचत करता ना, और आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने जो शो किया पहले एक नारी 4 ब्रह्मचारी, उसमें टिकट्स लगाए थे। पॉम्पलेट में एडवर्टाइजमेंट कैसा क्या था, नहीं हंसेंगे आप तो आपकी टिकट के पैसे वापस। अच्छा। नहीं हंसेंगे आप तो टिकट के पैसे वापस। सरदार भी जाता था, राजेंद्र सिंह बोल के, उन्होंने बोला भास्कर तुम नाटक की बहुत बातें करते हो यार, तुम ये नाटक पढ़ो, वेटिंग फॉर गोदो। बोला मैं पढ़ूंगा। उसमें मैंने लकी का स्पीच पढ़ा, लकी का स्पीच पढ़ने के बाद लगा कि रियली समथिंग डिफरेंट। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन somebody is there. बिल्कुल। Somebody is there. We are waiting for Godot, G-O-D-O-T है वो, an attendant Godot के फ्रेंच नेम है उसका, वेटिंग फॉर गोदो इंग्लिश नाम है उसका। गोदो के इंतजार में, गोदो से वेटिंग फॉर गोदो मैंने वैसी नाम रखा है। जब मैंने सोचा कि ये सब है, पोजो है, लकी है, लेकिन और लकी जो है सो एक इंटेलेक्चुअल मैन है, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल है बहुत, लेकिन उसका जो रोप है, माइंड का रोप, वो पोजो के हाथ में है। जब तक पोजो उसको बोलेगा नहीं कि तू कुछ बोल, जब तक कुछ नहीं बोलेगा। इन्हें खाए से झूठी हड्डियां फेंकेगा। आज का जमाना भी वही है, मतलब उस जमाने में वैसी था। हाईली इंटेलेक्चुअल जैसे तो मिनिस्टर लेवल के मिनिस्टर्स के सब अंडर में थे। ये लोग जो बोलते थे उन्होंने लिखते थे। जब इंटेलेक्चुअल बोलेगा कुछ सवाल तो उन्होंने लिखते थे। पहले ऐसा सुना था मैं। तो वो लक्की का कैरेक्टर पढ़ने के बाद मैं इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। ट्रांसलेट करने के बाद जब तक तो मराठी थिएटर हम कर रहे थे, बहुत से नाटक करे, बच्चों के नाटक करे, ये नाटक करे, वो नाटक करे, लेकिन तकलीफ यह आई कि हमारे ट्रेडिशनल थिएटर करने वाले जो लोग हैं उन्होंने कहा क्या है भास्कर, पागल हो गया। बोले अरे ये वेटिंग फॉर गोदो क्या है, इसमें लड़की है ना, हीरोइन है ना, हीरो है ना, रोना है ना धोना है। एक जना आता हूँ बोलता है, एक जना जाता हूँ बोलता है, एक जना वेट बोलता है, टुडे संडे बोलता है, टुमारो इज मंडे बोलता है। हु इज गोदो, ब्लैक शिप क्या है, व्हाइट शिप, व्हाइट गोदो क्या है, ये सब सिंबल्स है उसके पूरे। तो ये क्या है, मजाक कर रहे हैं, बोले हैदराबाद का नाम बदनाम कर देंगे बोले। तो हमको रिहर्सल को जगह नहीं मिली, रिहर्सल को जगह नहीं दी। लेकिन हमारे पास हमारे प्रोफेसर थे वसंत गोडसे बोल के, प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्ट कॉलेज। उन्होंने सोचा कि बस ये बच्चों को लेके ये नाटक करना। ट्रांसलेशन करने के लिए मैं जब तक बीकॉम कर लिया था, मैंने बीकॉम पास हो गया था। अच्छा, मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट, मेरे को लिटरेचर का कुछ भी नहीं मालूम। इंग्लिश की स्क्रिप्ट मंगाई, अंग्रेजी में स्क्रिप्ट मंगाई। मंगाने के बाद अब अंग्रेजी भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी चाहिए, मतलब उसके तो डिक्शनरी बाजू रखी मैंने, उसका ट्रांसलेशन करता था। और लेकिन डॉक्टर आइजैक सिक्योरा थे CCR में, उनसे जाके मिलता था। मैं बोलता मैंने ये ऐसा ऐसा ट्रांसलेट किया है, ये ऐसा ऐसा ट्रांसलेट किया है। फिर मराठी में हमारे लोगों को पढ़ के सुनाता था। कैसा कैसा मालूम होता है तुमको, अच्छा मालूम होता है, क्योंकि लैंग्वेज मराठी भी बराबर नहीं थी ना। मराठी 10वीं तक पढ़े तो रस्व दीर्घ की गलतियां अभी भी करता हूँ मैं मराठी में।
तो वो स्क्रिप्ट बन गई। अब उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम महाराष्ट्र स्टेट कंपटीशन जाएंगे पहली बार। ओके। यहाँ से हमने एंट्री भेज दी, तो उन्होंने कहा कि राइटर का परमिशन चाहिए, तो हमने लेटर लिखा उसको, तो उन्होंने फ्रेंच लेटर में लिखा, देखिए लेटर है, उसे मराठी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उसके बाद का और एक लेटर था, वो नहीं मिला मेरे को। उन्होंने कहा था कि परफॉर्मेंस के बाद पूरे फोटोज और पेपर रिपोर्ट्स पूरे हमको भेज दो, तो हमने भेज दिए हैं उनको, उनकी लाइब्रेरी में है फ्रांस में। तो वेटिंग फॉर गोदो के लिए, रिहर्सल के लिए आप ताजुब करेंगे, 6 मंथ्स रिहर्सल करे हमने। ओके मैन। क्योंकि इसमें लेडी कैरेक्टर नहीं है। यस। और अब्सर्ड है बहुत, आएगा जाएगा, लेकिन उसके जो पेंटिंग्स और कॉस्ट्यूम जो बनाए थे हमारे गोरचे साहब ने, वहां पर हम सब सीखे व्हाट इज कलर, व्हाट इज हाउ टू बैलेंस द स्टेज कैनवास। पहले राउंड में हम औरंगाबाद गए, वहां पर सेलेक्ट हो गए। टोटल मेरा ख्याल है टोटल उनके 6 ग्रुप सेंटर थे, तो हर सेंटर में 20 प्ले आते थे, 19 या 20 प्ले, तो उसमें से 2 सेलेक्ट करते थे। फाइनल को हमको 19 प्लेस थे, उसमें अमरीश पुरी का प्ले, हमारे अमोल पालेकर का प्ले, उसका सत्यदेव दुबे का प्ले, ये सब प्लेस थे। और हम पहली बार बम्बई गए। अब मुंबई जाने के बाद वो लाइट, अच्छा हमने पेपर के ऊपर, ड्राइंग पेपर में अनंता HL में इंजीनियर था, मैंने अनंता सेक्रेटरी, अनंता बोलता हूँ उसको मैं, नहीं है अभी। तो उसने लाइट डिजाइन पूरी प्ले, इसकी कलर स्कीम के, पेपर्स के कलर कैसे चेंज हो सकते हैं, इसके कलर कैसे चेंज, हमारे बहुत से कॉस्ट्यूम ऐसे डिजाइन किए थे। ये कॉस्ट्यूम अगर सबको येलो रहा ना, क्योंकि ग्रे है, हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट का जब समर रहेगा तो ये पूरा सूख जाएगा, जब हार्वेस्ट आएगा तो ये पूरा ग्रीन बन जाएगा। तो उन्होंने ब्लू लाइट्स ऊपर से डाले थे, तो ये ग्रीन आपको खुद हो जाता था। और 2 shadows, 2 characters on the stage, and you can see on cyclodrama 64 shadows. Oh wow, brilliant. यानी ये सब पेपर का काम था। How did you adapt to audiences in different cities, and how did Hyderabadis receive your plays? Yes, nobody can adapt that audience. It depends upon you, how you are going to perform, and it depends upon the publicity of how you are going to do the publicity, and about the play, what type of the play you are selected, who is the writer, director, all the things will have their own placement in the getting the audience for that. And in Hyderabad also, there are some plays where, in particularly when I am seeing the plays which is belong to the only in Telugu particularly, when the free shows are there, due to the competition, Telugu there is a competition always every year. Nandi Awards was given by the Andhra Pradesh government. I was the jury for 2003. And that time I see the adaptation of the audience. The adaptation is basically depend upon the play and depend upon your talent and your caliber. All our people are invited. Many people are related to the artists, actors, parents, brothers, sisters, almost all friends will come free if the free show is there. If the ticket show is there, the people who want to see the theatre, they will come. That is there. And whenever we go to for other cities, other parts of the place in India, there will be wide publicity, because when we went to the Bharadwaj, there is wide publicity about the group, about the play, about this. Their audience is fixed audience. They have got their own audience. You cannot say that you can bring that audience to here. And audience, you cannot educate the audience also. Audience is depend upon your performance. If I am doing a street play, the people who are going from here to there, who are the walking people, they will come and see, they will be able to see the play if they are interested. Otherwise, like a garbage show. If they are interested, they will hear and they will go. Yes. But particularly audience for a play, I say, is required somewhat interest in the literature also. What are your views on diversity in theatre? Like each state has a different style.
So, how do you treat an adaptation from a different language or style? Adaptation and translations are two things are different. If you adapt from the other language, you must have the command on that language. Otherwise, you have to take the help of the person who is having the command on the both language, which you want to translate, which you want to translate, or you want to adopt. There must be a command. There must be a command. And translation, adaptation means there must be a nativity of that play. The nativity should come in adaptation. That's why I said, waiting for Godot, I have translated. Yes. I have not adapted. No. As it is, the locations are as it is, the situations are as it is, and the end also as it is. In adaptation, you can change. It's depend upon your language. It's depend upon your nativity of the language. It's upon the flavor of the language, color of the language. All the things you do because it is going to be adopted for a audience. If I adopt Girish Karnad's Hyderabadi, if you see in English, it will be entirely different Hyderabadi. And if you see in Kannada, you will find the difference between the English play and Kannada play. Because you will find the nativity in Kannada play. Very much nativity in Kannada play. And you will feel it, you will gel with it. Yes. You will gel with it. Yes. So you will have the same experience what the actors are getting in the story. But in translation, it is very difficult for translation. That's why many people are translated. Adaptation of the Shakespeare play, people are doing a lot of things. Nowadays, they are doing as they want it. Because Shakespeare is not the interpretation, they are doing their own way. But whether the tragedy of the Shakespeare or Shakespearean tragedy, they don't understand. Tragedy of the Shakespeare or Shakespearean tragedy, it is a difference between these two. Yes. These two they must understand. Yes. That's why we must be very careful for adapting the play from other languages. We must be very careful. The adapter must be careful, and the director who is going to direct the play, he must have the command and the language. Okay. What is your message to young theatre enthusiasts? Theatre never died. Since starting in old age, what is age, that age, Iron Age, Holy Stone Age, the theatre never died. It is the communication between the echo of the human voices. Theatre is a slice of the life, social life, human life. And theatre is a performing art, it is a live art. There must be a performer, there is a spectator. Performer and spectator must have a kind of relation, aesthetic relation between them. Then only the play will go. The play will go, whatever it may be. Theatre will not preach anything. If you preach anything, that means you are one-sided. Theatre always put the problem. Theatre always exhibit the problem and left to the audience whatever the decision they want to take. Okay. That is there. And for the young artist, please don't take theatre, only theatre. Theatre is a performing art, having other arts also in that. It is not only one single art. Music is there, carpentry is there, then haircut salon, barber is there. All the things are there. Sculptures, banne wala bhi there, right? Stage craft be there. It is a combination of all the arts, where singing भी है, song भी है, ये सब का combination होता है theatre. Theatre is a performing art where the words are able to walk and talk. Okay, acha. Where the words from page to stage, this transformation page to stage, it will have its own time. It will have its own method. Then only you will do theatre. Thank you, sir. Thank you for being on our show today. It has truly been an honor to host you.